Hello student, welcome to next lecture of programming in C. Today is our lecture for program logic development. Okay, so the learning outcome of today's video, we see the flowchart problems in this lecture. Okay, so first draw the flowchart to calculate the addition of two given numbers. In last lecture we see the algorithms example or algorithm problems. In this lecture we see the flowchart problem. Simple flowchart means the diagrammatical representation of algorithm, or we can say diagrammatical representation of the solution of the any problem. Okay, here our problem is addition of two numbers. We see the algorithm for same. In flowchart, first lecture we see the various figures used in the flowchart. Okay, so for start and stop we use this oval. Okay, so first always step is start. Okay, second declare variable number 1, number 2 and sum. Okay, so for addition there are two inputs, number 1 and number 2. Okay, and one output is sum. Then next one, read the two numbers, number 1 and number 2. Then next step is add number 1, number 2 and assign value to the sum. Okay, so simple formula is sum is equal to num1 plus num2. Okay, and then print sum and stop. So this is simple flowchart for the addition of two numbers. Okay, the important is the figure used for the declaration. Okay, first we use oval. So when we use the oval to start and stop, then next one to for input and output we use the parallelogram. Okay, this is parallelogram. Okay, so for input and output operation we use this. Here we take the input, so read number 1 and number 2 is the input. Okay, so for that we use the parallelogram. And here we print the sum, means we define the output. That time also we use the parallelogram. And for processing or calculation we use the rectangle. Okay, so remember these things, and this is simple flowchart. Okay, next flowchart, draw the flowchart for swapping of two numbers. Okay, दो number को swap करना है. So for that first step is always start, then read A and B. First आपको दो नंबर रीड करना है, A and B. Okay, A, B and C. तीन किया तो भी चलेगा, दो रीड किया तो भी चलेगा. Okay, then inside C we save the value of A, then inside A we save the value of B, and inside B we save the value of C. Okay, so this is swapping of two numbers. For that we perform these three operations. Okay, then after this A and B is swapped. Okay, so we print the value of A and B. Okay, then last step is stop. Okay, next draw the flowchart to find the sum and average of three numbers. First अपने को sum find करना है and then average find करना है. Okay, so for that our input is three numbers. तीन नंबर का करना है, so तीन नंबर input चाहिए. Okay, output में दो आएगा. First output is average, second output is sum. Okay, so first step is start, then read A and B and C. तीन नंबर आपको read करना पड़ेगा. So these are the three inputs. Then find the two output. Sum is equal to A plus B plus C. Okay, so this is formula for sum, and for average sum divide by 3. Okay, so we get the average. Okay, then next print sum and average, then stop. So this is simple flowchart to find the average of three numbers. Next, draw the flowchart to determine whether a given number is divisible by 5 or not. Okay, so divisible by 5 means the number which is completely divisible by 5 means remainder is 0. Okay, just example is 25, 50. These are the numbers which are completely divisible by 5. Okay, so first step is start,
देन रीड द नंबर, ओके, रीड नंबर ए, ओके, जो नंबर को आपको चेक करना है डिविजिबल है या नहीं है उसको वो कंसिडर करेंगे ए, ओके। देन दिस इज डिसीजन मेकिंग, फॉर डिसीजन मेकिंग वी यूज दिस फिगर that is called as diamond, okay। If then we calculate, okay, then we check the condition. If a modulus 5 means this is modulus operator which gives the remainder in the division। आप जो डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करते हो उसमें ये ऑपरेटर जो है वो क्या आउटपुट में देता है, रिमाइंडर, ओके, जो डिवीजन में रिमाइंडर आएगा। इफ दैट रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, अगर ये रिमाइंडर 0 है तो नंबर इज डिविजिबल बाय 5, ओके। सो इन दिस कंडीशन देर आर टू पॉसिबिलिटीज, फर्स्ट वन इज यस और नो, ओके, और यू कैन से ट्रू और फॉल्स। एक कंडीशन ट्रू हो सकता है, नहीं तो फॉल्स हो सकता है, ओके। इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 5, okay, is equal to 0, a is this, if this condition is true then a is divisible by 5, if this condition is false that means no, then a is not divisible by 5, okay। कोई भी a की ऑपरेशन इसमें से एग्जीक्यूट होगा, okay। then last step is stop। so this is simple flowchart for to determine whether given number is divisible by 5 or not। next one, draw the flowchart to print even number from 1 to 100, okay। so यहाँ पे प्रिंट करना है 1 to 100 नंबर, even number from 1 to 100, okay। so first step is start, then initialize variable। first I का एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, I is equal to 1। यहाँ पे 1 क्यों लिया, why, because we start the checking from 1, okay। अपने को 1 से लेके 100 तक even नंबर प्रिंट करना है। so basically all of you know what is even number, the number which are divisible by 2, that numbers are called as even number, okay। example 4, 6, 8, 10, these are the numbers which are divisible by 2 and that numbers are called as even number, okay। so first I is equal to 1, then then if I is, first check I is less than 100। अभी ये कंडीशन क्यों दिया, I is less than equal to 100, बिकॉज अपने को कहाँ तक चेक करना है, 100 तक, ओके। सो इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, ओके, देन इट गोज टू I is equal to I plus 1, okay। then if this condition is true then I modulus 2 is equal to 0, okay। so if I modulus 2 is equal to 0, if this condition is true then yes, print I, okay। तो अपने वो even number print हो जाएगा, okay। if the condition is false then no, then again it goes to I and I plus 1, okay। so first I का वैल्यू था 1, so उसने चेक किया 1 के लिए, then second I is equal to I plus 1, okay। so I plus 1 उसने इंक्रीज कर दिया I का वैल्यू 1 से, so it again check for second 2, okay। ऐसा कब तक एग्जीक्यूट करेगा वो, अप टू I is equal to or less than 100, okay। final last step is stop, okay। when this condition get false then it stop the execution, okay। so this is simple flowchart to draw the to print the even number from 1 to 100। next, draw the flowchart to find the largest of two number। दो नंबर में से आपको लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, ओके। सो फर्स्ट स्टेप इज स्टार्ट, देन इनपुट वैल्यू ऑफ num1, इनपुट वैल्यू ऑफ num2। सो दो नंबर आपने यहाँ पे इनपुट ले लिया, देन चेक करना है इफ num1 इज ग्रेटर देन num2, ओके। सो अभी यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटी है, आइदर दिस कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। सो इफ दिस कंडीशन इज ट्रू दैट मीन्स यस, देन प्रिंट लार्जेस्ट नंबर इज num1, okay। if this condition is false then print largest number is num2, then stop, okay। so कोई भी एक ही एग्जीक्यूट होगा, either नंबर 1 ग्रेटर रहेगा नहीं तो नंबर 2 ग्रेटर रहेगा, okay। then next flowchart, draw the flowchart to find the given number is odd or even, okay। एक नंबर दिया रहेगा, उसको चेक करना है इवन नंबर है या ऑड नंबर है, ओके। सो फ्लो चार्ट फर्स्ट स्टेप इज स्टार्ट, सेकेंड इनपुट नंबर, ओके। एक नंबर आपको इनपुट लेना पड़ेगा, तो नंबर में स्टोर करेंगे। इफ नंबर दैट नंबर मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0, देन
अभी ये कंडीशन either true or false. If this condition is true, then display number is even. If this condition is false, then display number is odd. Then stop. So this is simple flowchart to check the number is even or odd. Then next, draw the flowchart to find the area of rectangle. Okay, यहाँ पे अपने को फाइंड करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ओके, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला इज लेंथ इंटू ब्रेथ. ओके, सो दो इनपुट चाहिए और एक आउटपुट आएगा. इनपुट में लेंथ और ब्रेथ आएगा, आउटपुट में एरिया आएगा. ओके, सो फर्स्ट स्टार्ट, देन रीड लेंथ एंड ब्रेथ. ओके, देन कैलकुलेट एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, देन डिस्प्ले द एरिया एंड देन स्टॉप. सो दिस इज सिंपल एल्गोरिथम to find the area of rectangle. Many time in examination ask draw the flowchart for आपको एक कोई भी प्रॉब्लम देंगे और बोलेंगे draw the flowchart. Okay, for 2 to 4 marks. Okay, then next one, draw the flowchart to find the year is leap or not. Okay, year is leap means the year which is divisible by 4, that year is called as leap year. Okay, then first step is start, read the year. इनपुट में ईयर चाहिए. ओके, देन ईयर मॉडुलस 4 मीन्स रिमाइंडर इज 0. ओके, आफ्टर डिवीजन. ओके, जो ईयर है उसको अगर आपने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए. ओके, सो फॉर दैट ईयर मॉडुलस 4 इज इक्वल टू 0. रिमेंबर दिस थिंग, मॉडुलस ऑपरेटर गिव द रिमाइंडर इन डिवीजन. ओके, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन ईयर इज लीप. इफ द कंडीशन इज false, then year is not leap. Okay, then stop. So in this lecture we see the some flowchart problems, and here your first chapter is completed. Thank you.